Hello everyone, I am Khushbu Malviya, Assistant Professor in Ajay Kumar Gar Engineering College, Ghaziabad. Today we are discuss another topic, process scheduler in operating system. Operating system code is BCS 401. So let us start. These are the content of our slide. These are the content of our slides. What is the process scheduling? Category of scheduling, types of scheduler, CPU scheduling algorithm, problem solved based on scheduling. Some problem I cover here, which is based on scheduling algorithm. So first is here, what is process scheduler in operating system? A process is the instance of a computer program in execution. Scheduling is an important operating system with multi-programming, as a multiple process might be eligible for running at a time. In a multi-programming operating system, the multiple programs are running simultaneously, so that CPU is utilization makes no CPU idle at any time. Okay, one of the key responsibility of operating system is to decide which program will execute on the CPU, because number of processes are running simultaneously. One process is running, then after which process is running, which process is going in which state. Okay, if any priority process is coming, so scheduler is scheduler CPU to that process. So here scheduler is needed. So this is the key responsibility of operating system, is to decide which program will execute on the CPU. Process scheduler are fundamental component of operating system, responsible for deciding order in which process are executed by the CPU. So what is process scheduling? Process scheduling is the activity of the process manager that handle the removal of the running process from the CPU and the selection of another process based on a particular strategy, like a priority, like a time quantum in round robin scheduling. Throughout its lifetime, a process move between various scheduling queue from ready queue to waiting queue, from ready to running to waiting queue, and suspend and block, all of the status of the operating system, which we will discuss in further slide. So this is the process state transition diagram. Um, this is the process state transition diagram. Here is the when process is just created, which is in the new state, when the process is created and want to execute, which is in the ready queue. And when a ready queue process in ready queue, the process ready queue में आ गई, or when a CPU is allocated to this process, then process is going from ready to running. Okay, and running when it's complete its task, then running to exit state. Okay, when some process want to input output request, so process is going from running to the wait or block state. Okay, when input output request completion of that process, so it again queue in the ready queue, and ready queue from ready queue to running state. Okay, so long term scheduler is here responsible for schedule a process from new state to ready state. And short term scheduler is also called a dispatcher, which is schedule a process from running to ready to running. Means here CPU is allocated to that process and process is executed here. Okay, and when a process complete all its execution, then process is going on the exit state. Okay, so when some process want to input output request and wait queue is full. Okay, so these process are going on the block suspended. For some time these process are suspend for particular time. And when wait or block is um, empty, then this process is going to the waiter block and from ready queue to is running state. So this is the process transition diagram. Here long term scheduler is working, here short term scheduler is working, and here middle term scheduler is working. So middle term scheduler is swap in and swap out from secondary memory to the primary memory to the secondary memory. So what is the category of scheduling? Scheduling fall into one of two category: non-primitive scheduling and primitive scheduling.
Non-preempting scheduling. In this case, a process resource cannot be taken before the process has finished the running state. If a process in running state and its task is not completed, process का task complete नहीं हुआ, then you cannot switch CPU to other process. आप इस process से CPU को लेके दूसरी process को नहीं दोगे, नहीं दे सकते. So it is called a non-primitive. And primitive scheduling, in this case, the operating system can switch a process from running state to ready state. The switching happen because the CPU may give other process priority and substitute the currently active process for the higher priority. Okay. If a process is running in the running state, okay, and higher priority process is coming, which is very important for execution, this process is stopped and this CPU is taken from that process and allotted for this high level priority process. So this is the primitive. Okay, this is the primitive scheduling. Primitive scheduling में आप CPU जो होता है वो किसी दूसरी प्रोसेस को अलॉट हो जाएगा, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में व्हेन अ प्रोसेस कंप्लीट इट्स ऑल टास्क, जब तक वो पूरा काम नहीं कर लेती एंड वो पूरा काम कंप्लीट करके टर्मिनेट नहीं होती, तब तक आप ये सीपीयू उससे क्या कर सकते हो, प्रिम्प्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज नॉट प्रिमिटिव एंड दिस इज प्रिमिटिव. सो टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर, there are three types of process scheduler: long term, which is also called job scheduler, short term scheduler and medium term scheduler. So what is a long term scheduler? Long term or job scheduler, it mainly process move from job queue to ready queue, which I earlier discussed with you. It controls degree of multi-programming, that is the number of process present in the ready state or in memory at any point. So what is the long term scheduler work? We want to achieve multi-programming, so many number of process. now इस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का वर्क क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेस को रेडी क्यू में क्या करना, प्लेस करना, उसे अरेंज कर दो रेडी क्यू में. ओके, सो short term scheduler, second one is short term scheduler, which is the CPU scheduler. CPU scheduler is responsible for selecting one process from the ready state for running. Okay, so what the role of short term scheduler? Ready queue में number of process arrange है, so short term scheduler decide which process CPU किस process को allocate करना है. CPU is allocate to which process is running, which process is stop. So short term scheduler having responsible for allocate CPU. CPU schedule, short term scheduler is responsible for selecting one process from the ready state for running. Okay, short term scheduler must select a new process from the CPU frequently to avoid starvation. Starvation is the process, starvation is the method where if number of processes are requiring a resource which is held by another process. एक resource है, वो इसमें already कोई process क्या हो रही है, execute हो रही है, और उसी समय पे दूसरी प्रोसेस भी उसी का रिक्वायरमेंट कर रही है. जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तभी उस प्रोसेस को क्या मिलेगा, सीपीयू मिलेगा. सो अगर वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुई तो ये सीपीयू की रिक्वायरमेंट करती रहेगी उस प्रोसेस की. तो ये कैसी प्रॉब्लम है, एक स्टार्वेशन की. तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मस्ट सिलेक्ट अ न्यू प्रोसेस फॉर द सीपीयू फ्रीक्वेंटली to avoid starvation. The CPU scheduler uses different scheduling algorithm to balance the allocation of CPU time. So different scheduling algorithm are used. CPU allocate to which process, okay, which I will discuss with you in further slides. It picks a process from ready queue. Its main objective is to make the best use of CPU. So short term scheduler is main work is CPU utilization, best CPU utilization. It mainly calls dispatcher. Faster among the three. So short term scheduler, medium term scheduler and long term scheduler. Short term scheduler is fast compared to medium term scheduler and long term scheduler. The dispatcher, short term scheduler is also called dispatcher, is responsible for loading the process selected by the short term scheduler on the CPU, ready to running state. Context switching is done by the dispatcher. So what happened here? Context switching, okay, one process is running to from one state to next state and next step is also coming on this state. एक process एक state से दूसरे state में क्या कर रही है, move कर रही है. तो context switching हो रहा है ना ये, तो ये dispatcher का work है. Okay, so here are the
long scheduler working, short term scheduler. Okay, here job queue, the process is coming in the ready queue, ready to CPU, and if process is completed its task, is exit. Okay, when process is waiting for some input output, then process is going to CPU to input output, waiting input output, and input output requirement is fulfilled, then it going on the ready queue. Okay, so this all about of the long term and short term scheduler. What is medium term scheduler? Medium term scheduler is responsible for moving a process from memory to disk or swapping. It reduces the degree of multi-programming, number of process present in main memory. Okay, a running process may become suspended if it makes input-output requests. A suspended process cannot make any progress towards completion. In this condition, to remove the process from memory and make a space of other process. So, क्या हो रहा है, अगर एक प्रोसेस सस्पेंडेड हो गई है, ओके, तो वो क्या हो रही है, प्रोग्रेस में नहीं है, तो उस टाइम पे मैं उस प्रोसेस को स्वैप आउट करो सेकेंडरी मेमोरी में, ओके, और उस मेमोरी को फ्री करके दूसरी प्रोसेस को चांस दो. तो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर की वर्किंग है. व्हेन नीडेड इट ब्रिंग्स प्रोसेस बैक इनटू मेमोरी एंड पिकअप राइट वेयर इट इज लेट ऑफ. अब जहां से प्रोसेस खत्म हुई है वहीं से उस प्रोसेस को वापस से एग्जीक्यूट करने के लिए वो रन होगी. ओके, इट इज फास्टर देन लॉन्ग टर्म एंड स्लोअर देन शॉर्ट टर्म. सो मीडियम टर्म शेड्यूलर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से तो फास्ट है, बट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से क्या है, कम है. तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, CPU scheduling in operating system. So ये सब होता किससे है, CPU scheduling. CPU scheduling is a process used by the operating system to decide which task or process gets to use the CPU at a particular time. This is important because the CPU can only handle one task at a time. CPU एक टाइम पे एक ही टास्क को हैंडल कर रहा है, ठीक है, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें ऐसा फील होता है कि मल्टीपल जॉब्स एक साथ रन हो रही है. ठीक है, ये इतनी मिली सेकेंड्स में मतलब फ्रिक्वेंटली इनको सीपीयू मतलब फ्रिक्वेंटली सीपीयू अलोकेट किया जाता है, डीअलोकेट किया जाता है, कि हमें ऐसा लग रहा है कि सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही साइमल्टेनियसली, बट सीपीयू कैन ओनली हैंडल वन टास्क एट एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है. ओके, बट इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सारे काम पैरेलली चल रहे हैं और हमें क्या अचीव हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग. The following are different purpose of CPU scheduling. What the main purpose of CPU scheduling? The main purpose is maximize the CPU utilization. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, CPU utilize हो. Okay, minimize the response and waiting time of the process. Means किसी भी प्रोसेस को CPU के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े, जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाए. ठीक है. What are the terminology used in CPU scheduling? Arrival time, completion time, burst time, turnaround time, waiting time. आपको क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, उस न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें आपको क्या कही जाती है, पूछी जाती है. सो यू हैव knowledge about what is arrival time, completion time, turnaround time. So arrival time, the time at which the process arrive in ready queue. I discuss the number of queue, ready queue, waiting queue, suspended, and terminate. Okay, so arrival time is the time at which the process arrive in the रेडी क्यू. जैसे ही प्रोसेस अराइव हुई रेडी क्यू में, दिस इज द अराइवल ऑफ द प्रोसेस. कंप्लीशन टाइम्स, द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट्स इट एग्जीक्यूशन. उसने पूरा काम कर लिया है. व्हेन एंटर इन द, एक प्रोसेस जो है सीपीयू में एंटर हुई, पूरा काम कंप्लीट करके फिनिश हुआ वर्क, सो इट इज द कंप्लीट टाइम. ओके, व्हाट इज द बस टाइम? टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस फॉर अ सीपीयू एग्जीक्यूशन. मतलब कितना टाइम चाहिए उसे अपने प्रोसेस को, उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, विच इज अ बस टाइम. सो अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम, बस टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम. टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम. So turnaround time we calculated by a formula, complete time minus arrival time. Waiting time, time difference between turnaround time and burst time. Okay, this is I discuss in numerical when we solve a numerical. So all these terms are coming and we complete this. Waiting time equal to turnaround time minus burst time. So so many CPU scheduling algorithm are in operating system. For FCFS, first come first serve, shortage job first, SRTF, shortage remaining time first, round robin, priority scheduling, highest response ratio next, multiple queue scheduling, and multi-level feedback queue scheduling. So let's discuss. I only discuss today is FCFS and round robin.
Okay, so CPU scheduling is two type, primitive scheduling and non-primitive. I discussed earlier primitive scheduling where आप क्या कर सकते हो, जो CPU है उसे क्या कर सकते हो, किसी प्रोसेस को allocate हुआ है तो उसे आप प्रिम्प्ट कर सकते हो. बट नॉन प्रिमिटिव जहां पर एक बार किसी प्रोसेस को CPU allocate कर दिया है तो प्रोसेस ही अगर चाहेगी तो वो CPU को रिलीज कर सकती है. अदरवाइज यू कांट प्रिम्प्ट दैट CPU फ्रॉम दैट प्रोसेस. ओके, फ्रॉम CPU फ्रॉम दैट प्रोसेस. सो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना. शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन्स व्हाट, जो प्रोसेस पहले सीपीयू में अलॉट हुई है, जिस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट होगा वही कंप्लीट करेगा, देन नेक्स्ट बाय लाइन. ओके, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जिसका सबसे कम बस टाइम होगा सबसे पहले सीपीयू उसको अलोकेट होगा. लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम है जिसका, उसे सीपीयू अलोकेट होगा. हाईएस्ट रिस्पांस टाइम रेशियो नेक्स्ट, जिसका ज्यादा है पहले सीपीयू उसको अलोकेट होगा. एंड प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेज रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग एंड राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन में क्या होता है, क्वांटम डिसाइड होता है, जितना टाइम क्वांटम दिया है ईच प्रोसेस को सीपीयू उतने टाइम के लिए क्या होगा, अलोकेट होगा. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी उसे उस प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा. सो है ना, ऐसे शॉर्टेज रिमेनिंग एंड लॉन्गेस्ट रिमेनिंग. सो लेट डिस्कस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. FCFS इज कंसिडर एज अ सिंपलेस्ट स्टेप. सबसे बेस क्या है, यही है शेड्यूलिंग के सबसे बेसिक FCFS. FCFS is considered as a simplest scheduling algorithm. In FCFS, sorry, that requires the CPU first is allocated in the CPU. जो पहले प्रोसेस आएगी सिस्टम में उस प्रोसेस को CPU allocate कर देंगे. Okay, so this process is also called a FIFO, first in first out. FCFS scheduling is non-primitive, which I discussed earlier. Okay, so here one problem which is come in your examination. Consider the given table below and find complete time, CT, turnaround time, waiting time, response time, average around waiting time, average turnaround time. So ये एक टाइप की प्रॉब्लम है ना, जहां आपको क्या दिया जाएगा, नंबर ऑफ प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5. इट इज गिवन. सपोज अराइवल टाइम इज 2, 0, 2, 3, 4. ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करने का बोला है, आपको एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला है आपको. ठीक है, सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम किससे कैलकुलेट होगा, कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम. तो आपको इसके लिए सीटी कंप्लीट टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो हमें उसको पहले क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, वेटिंग टाइम. ओके, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला व्हाट इज TAT माइनस BT. सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम. तो सो बस टाइम हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा. सो CT और BT को आप जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कंप्लीट टाइम और बस टाइम, देन यू गेट आंसर TAT एंड वेटिंग टाइम, और फिर इसको प्लस करके आप एवरेज निकालोगे. ओके, सो ये कैसे कैलकुलेट होता है, आई डिस्क्राइब यू. सो ये हेल्प, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है विद द हेल्प ऑफ Gantt चार्ट. ओके, सो सी हियर. फर्स्टली, which processes arrive in the system? P1. No, P1 is not arrive because arrival time is given here. Process P2 arrive at 0 time. So first P2 arrive and this is the FCFS first come first serve. So P2 को क्या करेंगे, सिस्टम allocate कर देंगे. So P2 प्रोसेस करेगी. What the bus time? Okay, बस टाइम कितना है ये भी आपको गिवन होगा. अराइवल टाइम और बस टाइम आपको गिवन होता है. ओके, और कंप्लीट टाइम बाकी आपको निकालना होगा. तो आपको P2 प्रोसेस कितने टाइम के लिए चाहिए, ओनली 1 यूनिट टाइम. ओके, 1 यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम. तो आपको P2 चलिए 0 से स्टार्ट 1, 0 to 1, एंड यू सी एट द टाइम ऑफ 1 एनी प्रोसेस अराइव इन द सिस्टम, P1, P3, P4, P5. No, so at that time CPU is idle. So we are show here CPU is idle. Okay, now at the time of 2, P1 and P3 both are arrived. So which process is allocate first, P1 or P3? So in ready queue P1 is come first and then P3. So we can allocate CPU, system operating system allocate CPU to first P1. So P1, how much time, bus time of P1? 2. So here the system is 2 plus 2, 4. So here P1 is placed, okay, in the Gantt. After that P3, how much time? 3. So 4 2 plus 3, 7. Okay, and P4 is 7 to 12. Why?
3, arrival time is 3, and at the time of 7, all process are arrived. Okay, so by line you can process this. P4 is 5, so 7 to 5, 12, and after that P5, bus time is 5, so 12 to 5, 17. This prepare a Gantt chart here. So from that you can complete CT, completion time. Okay, so 0 to, what is the process P2 completion time? What the completion time of P2? Okay, P2 completion time is 1, 0 to 1. 1 time में complete हो गई है ये. Okay, what is the completion time of P5? P5 completion time is 17. What is the completion time of P4? P4 is 12. At that type of, like that you can calculate CT, and turnaround time and waiting time you can calculate by CT minus 80 and TAT minus 90, and these are the response time. So response time is calculated. One I can explain how the response time is 8 of the P5 when P5 is enter in the system at the 4 amount time. Okay, and P5 is completed. P5 is responding at 12 time. Okay, so 12 minus 4 is 8. So this is the problem solved FCFS, and average waiting time and average turnaround time is calculated in this way. Okay, and next we further discuss another scheduling algorithm. Thank you.